pivots require a lot of pain because you give up on things that you worked. आप 1.5 साल काम कर रहे होते हैं, सडनली उसे बंद कर देना है. और हम लोगों के लिए वो पिवट रोज होते हैं. इन अ वे वी स्टॉप working on a product, we stop working on certain formulations. For example, when we built Airing, it was a solvent based thing. Solvents have smell. If you realize, if you have a solvent based marker here, you open it, even those markers, the whiteboard, they smell. And हम लोगों को फीडबैक आता था कस्टमर से, आपका मार्कर बहुत स्मेल कर रहा है. वो करता भी था, टू बी ऑनेस्ट. तो and then because it was made from pollution, people had another sense of negativity associated कि यार ये कहीं मेरे लिए बहुत हार्मफुल तो नहीं है. बट इफ़ यू थिंक ऑफ इट, एनी सॉल्वेंट बेस्ड मार्कर विल हैव दैट स्मेल. बट देन वी रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद दिस unnecessary negativity, we will completely pivot. And we gave up on solvent based things completely. It took us 6-7 months to move to water based solutions. Now these are nitty-gritties of things, but which take a lot of time. To move your production, it's like, moving a gasoline car to EV. It completely changes how you're doing things. Your supply chain changes, your production partners change, your compliance changes, and you're not sure if you can meet the performance standards. So वो पूरा pivot हमने किया जो किसी को पता भी नहीं है public में. So yes, I can talk about it. Yes, I'm not capturing pollution from vehicles. That is in public. You won't see a culling device attached to any vehicle right now. But these type of internal pivots also happen, which take a lot of time. And which require market awareness, which require accepting the pain that comes with that process. And do you feel कि pivot के time पे correct mindset होना भी बहुत ज़रूरी है? Because I sometimes hear like people say that अरे यार इस पे तो बहुत मेहनत करी थी, ये तो नहीं चला, अब फिर कुछ और like. I think सबसे ज़रूरी pivot के time पे जो होता है ये कि आपको ना एक बार के लिए रोकना पड़ता है. और so it's like if you have to, in a car, if you have to go in another direction, you have to do the gear shift. And sometimes if you have to go reverse, you have to do from neutral and then only you can go. So neutral करना, if you ये गाड़ी का एनोलॉजी है, बट जो अच्छे लोग गाड़ी चलाते हैं वो कहते हैं कि आपको गियर शिफ्ट ना डायरेक्टली नहीं करना चाहिए. यू हैव टू गो न्यूट्रल एंड देन गो टू द अदर गियर. कई बार हर पिवट में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप उस टाइम पे आपका माइंडसेट कभी भी अच्छा नहीं होता है. ये सच्चाई है कि जब भी आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि पिवट करना है तो माइंडसेट अच्छा हो ही नहीं सकता. ठीक है, एनीथिंग दैट इज ब्रेकिंग डाउन और स्टॉपिंग, यू कैनॉट हैव अ गुड माइंडसेट. बट टू गेट इन टू द गुड माइंडसेट यू हैव टू पॉज, एंड दैट मैटर्स. सो हर पिवट, इसलिए मैंने कहा पेनफुल होता है, तो उस पेन को आपको जाना ही पड़ता है. बट आप यू शुडंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर इमोशंस. आपको फैक्ट्स क्या बता रहे हैं वो आप, दैट शुड बी अ थिंग दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव अ न्यूट्रल माइंडसेट. तो न्यूट्रल माइंडसेट आने में टाइम लगता है. इसलिए मैंने कहा कि पिवट्स कई तो पब्लिक हैं, कई तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनली हुए हैं जिसमें लोगों को स्ट्रगल पता ही नहीं है कि कैसे हुआ वो चीज़. बट दोज वर द बिगेस्ट स्ट्रगल बिकॉज यू से कि आई विल नॉट सेल वॉट पीपल आर कंज्यूमिंग, आई विल मेक द सेम प्रोडक्ट इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे. एंड इट डजंट लुक डिफरेंट. इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट आउटसाइड सब कुछ सेम है, अंदर से वो बिल्कुल चेंज हो चुका है. बट इट डज रिक्वायर दैट अवेयरनेस. यू हैव टू स्टॉप बिकॉज internally as a team, externally there is always this resistance to keep doing what you are doing, not give up on the momentum.